everyone, welcome back to IQRA IAS, and today we'll be covering current affairs from 15th of February to 21st of February. So as always, without wasting any time, let's just directly get into it. And the first topic we have this week is voluntary guidelines on food systems and nutrition. So before we come to these guidelines, first we should understand that malnutrition is a major problem in the entire world these days, and malnutrition affects all the countries, and around 800 million people are undernourished, and around 2 billion are affected by micronutrients deficiencies. ठीक है, और इन deficiencies को हम hidden hunger भी बोलते हैं. We call them hidden hunger. I'm really sorry. It's hidden hunger. Okay. And please don't misunderstand this malnutrition, don't misunderstand this malnutrition just with being weak or being thin. Malnutrition हम तब भी हो सकते हैं when we are obese. So you can be malnutrition when you're obese also, right? And this problem of obesity cost us a lot, right? So this is one major problem. So to overcome the problem of malnutrition and these problems, time to time various agencies, FAO हो गया, हमारे Indian organizations भी time to time कुछ guidelines release करते रहते हैं. Abhi recently this new guideline has been released and we'll be reading about it. So United Nations Committee on World Food Insecurity ने ये एक guideline release करी है. Let's just directly jump into the guidelines only कि guidelines क्या कहती हैं. There are 7 focus areas they have distributed these guidelines into. First they talked about the governance, which is transparent, democratic and accountable. So the governance should be good, should be favorable to achieve these kind of guidelines. ठीक है, sustainable food supply chains होने चाहिए ताकि healthy diets को हम achieve कर पाएं. Equal and equitable access होना चाहिए सबको healthy diets का. Food safety should be there. People-centered nutrition knowledge. This is a really important point. I feel that nutrition knowledge should be there among people. Education should be there. Right kind of proper information should be there. All right. Gender equality and women empowerment should be there, which definitely helps to achieve the equality and the equity in terms of food safety. All right. And so these are certain focus areas which this guideline has focused upon. Apart from this, as the name indicates, that the entire aim behind this is to eradicate all forms of hunger and malnutrition only, right? And also to achieve our sustainable development goal number 2, which is zero hunger. All right. So significance iska basically yehi hai that it wants to eradicate all the form of hunger and malnutrition present in the world. Okay. Apart from this, if we read about the Committee on World Food and Safety, the organization which has released this, the committee which has released this report, तो ये जो committee है, it is an intergovernmental body, 1974 में establish हुई थी, right? इसका headquarter भी Rome, Italy में ही present है. It is located in FAO only, Food and Agriculture Organization, जो it is a very famous organization situated in Rome in Italy. Rome, which is the capital of Italy. ठीक है, और इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है UNGO को, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली थ्रू इकोसॉक, जो कि इसी की एक बॉडी है, राइट? और FAO को, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू टॉक अबाउट इट्स फंडिंग, तो इसकी फंडिंग 3 जगह से आती है. एक FAO से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IFAD, दीज ऑल आर द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ऑलराइट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फूड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से इसकी फंडिंग आती है. So just 2-3 points about this. To summarize this topic, we've read about how malnutrition is spreading in the world, how much it is dangerous for our economy, for our health, right? Or we have read these new guidelines. ठीक है, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ा. Sustainable Development Goal number 2, which is zero hunger, and we've also read that these guidelines are basically to eradicate all forms of hunger and malnutrition present in the world, right? And we have also read about a new committee today, that is World Food Security Committee.
ठीक है, इसकी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी, राइट. So that was all about this topic. Up next we have fossils of Dinkinsonia found at Bhimbetka. Bhimbetka, which is a UNESCO, World Heritage Site also. तो यहाँ पर कुछ fossils मिले हैं Dinkinsonia के. अब ये Dinkinsonia है क्या? It is the earliest known living animal. ठीक है, Dinkinsonia जिसको हम बोलते हैं, तो इसके कुछ fossils मिले हैं Bhimbetka rock shelters में. All right. If we talk about Dinkinsonia, तो I'll just show you the picture of this. सबसे पहले ये इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसकी शैडो है. दिस इज नॉट द एनिमल इटसेल्फ. ये इसका फॉसिल हमें वहाँ पर मिला है. ये एक भीमबेटका की रूफ केव्स की जो रूफ थी वहाँ पर हमें इसका ये शैडो देखने को मिला है. ठीक है, इट इज़ 17 इंचेस लॉन्ग जो ये प्रेजेंट हमें इसका जो फॉसिल मिला है. ऑलराइट. So this was, तो ये एक leaf like, as you can see, this is a leaf like structure of Dinkinsonia, right? If we talk about little more about this animal species, तो it is an extinct genus of basal animal. ठीक है, extinct one, right? But ये अभी हमें fossils यहाँ पर देखने को मिले हैं. Alright. अगर what's more important for us for our exam perspective is to know two things here. First, कि ये fossil जो है वो कहाँ पर मिला है. So Bhimbetka जो cave rock shelters है ये यहाँ पर मिला है. And the more important thing for our exam is to know about the Bhimbetka itself, this UNESCO World Heritage Site itself. It is very important for our exam. So as we all know, it is an archaeological site in central India, in Madhya Pradesh, that spans the prehistoric, Paleolithic and Mesolithic periods, as we all know, right? ये UNESCO World Heritage Site है, as we have discussed earlier, right? Which consists of 7 hills you must have heard of, and over 750 rock shelters यहाँ पर present हैं. ठीक है, Bhimbetka site has the oldest known rock art in India, where you can see the prehistoric cave paintings with a lot of themes. यहाँ पर बहुत theme based cave paintings हैं. Like for example, you will find dancing theme आपको यहाँ पर मिल जाएगी, hunting theme यहाँ पर मिल जाएगी आपको. ठीक है, collecting honey, और बहुत सारे animal के paintings वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. तो theme based बहुत सारी cave paintings हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. सो दैट वाज मेजरली अबाउट भीमबेटका. ठीक है, सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जस्ट 2 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर हियर. फर्स्ट अबाउट दिस फॉसिल, की फॉसिल हमें मिला कहाँ है, राइट? एंड सेकेंड अबाउट दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ऑलराइट, दैट वाज ऑल अबाउट इट. नेक्स्ट अप वी हैव पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी. सो रिसेंटली एक नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी आई है जहाँ पर गवर्नमेंट ने PSCs को ना 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया है. वन इज स्ट्रेटेजिक एंड अनदर इज नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर. बट बिफोर वी रीड कि ये क्या सेक्टर्स हैं, इनमें कौन कौन सी सेक्टर्स को हमने डाला है, स्ट्रेटेजिक में कौन से सेक्टर्स हैं, नॉन स्ट्रेटेजिक में कौन से सेक्टर्स हैं, लेट मी फर्स्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि PSU, द कंसेप्ट ऑफ PSU and privatization and all of that. Okay, so PSU is, as you know, the public sector undertaking is a term which is used for the companies that are owned by the government of India, right? And the main reason for setting up of PSUs was to strengthen the core sectors of the economy. Because, just after the independence, we didn't had much private players and private companies to invest into the economy. But as we all know, जैसे ही 1991 में LPG रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आए, तो प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुई, राइट? सो प्राइवेटाइजेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग आफ्टर दैट 1991 LPG रिफॉर्म्स के बाद. एंड प्राइवेटाइजेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर्स, राइट? Okay, so that was a brief about the privatization and PSUs. अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने ये PSCs को 2 सेक्टर में डिवाइड किया है. सो फॉर बेटर पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड फॉर बेटर पॉलिसी मेकिंग ऑब्वियसली, तो 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेजिक and the another one is non-strategic sectors. Strategic sectors को 4 categories में divide किया है, या फिर you can say the following sectors are covered under the strategic sectors. Strategic और non-strategic में एक major, एक बहुत ही simple words में you can remember the difference, कि strategic sectors वो होते हैं जहाँ पर government has more role to play, right? On the other hand, non-strategic सेक्टर्स में
प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा रोल होता है, ठीक है. सो दिस इज़ द मेजर एंड अ ब्रीफ डिफरेंस यू कैन रिमेंबर. सो अगेन दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. ये चार जो कैटेगरीज हैं, ये चार जो कंपनीज हैं, ये चार जो सेक्टर्स हैं जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में फॉल करते हैं, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न. यू डायरेक्टली हैव टू लर्न देम. तो जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जिसका गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा, द फर्स्ट सेक्टर इज़ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस. सेकंड ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन में को स्ट्रेटेजिक सेक्टर में डाला है गवर्नमेंट ने. देन पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स को स्ट्रेटेजिक में डाला है. देन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को डाला है, राइट. सो दीज आर द मेजर सेक्टर्स जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में फॉल करेंगे. एक्चुअली ये इशू बहुत टाइम से चल रहा था, अराउंड 1 साल से ये इशू चल रहा था. बट डेफिनेटली मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि वी विल बी फाइनलाइजिंग द एग्जैक्ट सेक्टर्स कि कौन से सेक्टर कौन से कहाँ पर फॉल करने चाहिए. नाउ दे हैव गिवन दिस 4 कैटेगरीज, द स्पेसिफिक कैटेगरीज. सो यू मेक श्योर यू रिमेंबर देम. डायरेक्टली ये क्वेश्चन में ये एग्जाम में आ सकता है, राइट. नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऑन द अनदर हैंड, वो जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन या फिर प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा रोल होता है. सो दैट इज़ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. आई विल जस्ट टेल देम कि कुछ पब्लिक सेक्टर क्लासेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ पोर्ट ट्रस्ट हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैं. ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि नहीं फॉल करेंगे किसी में भी, राइट. प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन होता क्या है. देयर इज दिस रियली इम्पॉर्टेंट body which is mentioned here, that is DPAM, Department of Investment and Public Asset Management. So they can also approach the cabinet for strategic disinvestment of a specific PSC, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फ्रॉम टाइम टू टाइम. अच्छा, अब यहाँ पर देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है. आई विल टेल यू देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. एक होता है नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट, अनदर इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. इन द नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट व्हाट वी डू, सपोज इफ द गवर्नमेंट हैज़ 100% शेयर इन सम कंपनी, या किसी एंटरप्राइज में गवर्नमेंट के 100% शेयर है, ठीक है, एंड गवर्नमेंट वांट्स टू सेल 10% और 15% और 20% ऑफ इट्स शेयर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट, कि नॉर्मली सरकार ने डिसइन्वेस्ट कर दिया, राइट. बट व्हाट हैपन्स इन द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, कि सपोज अगेन वी टेक द सेम सिनेरियो. If the government has 100% share in some company or some enterprise, और government अपनी ownership वहाँ पर 51% से कम कर देती है उस particular company में, ठीक है, उसको हम strategic disinvestment कहते हैं. I'll just repeat it for you. Suppose if a government has 100% share in some enterprise और government अपनी ownership उस particular enterprise में 51% से कम कर देती है, 51% share से भी कम कर देती है, तो उसको हम strategic disinvestment कहते हैं. All right, I hope it was it is clear to you now. Okay, so to summarize this, तो ये एक नई पॉलिसी आई है where we have differentiated these 2 sectors, और इन सेक्टर्स में भी हमने बताया है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्या exactly कौन से सेक्टर्स फॉल करते हैं. This is important. Then we've also read about the process or the concept of privatization, and we've also read about this important body DPAM. All right, okay. So that was all about this topic. Up next we have Labour Ministry All India Survey. So recently Labour Ministry ने Union Minister of Labour ने एक software application launch किया है so that we can conduct certain surveys, जो कि of course we will be using technologies here, तो वो time रिड्यूस करने वाले हैं हमारा टू कंडक्ट द सर्विस, जो कि जनरली मैनुअली अगर जब हम करते हैं तो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो दे विल बी प्रिपेयरिंग सर्टेन क्वेश्चनर्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दे विल बी डूइंग. तो टेक्नोलॉजीज बेसिकली यूज़ करके दे विल बी कंडक्टिंग दिस सर्वे दिस टाइम. सो पांच सर्वेज के बारे में उन्होंने बोला है. द फर्स्ट सर्वे दे विल बी कंडक्टिंग इज ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर. तो डोमेस्टिक वर्कर पे ये पहला सर्वे कंडक्ट करने वाले हैं. सेकंड विल बी ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, की उनकी लिविंग कंडीशंस क्या हैं, उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है, क्या प्रॉपर एस्टिमेशन है उनका, उनके वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, या फिर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं. सो इट विल बी कंडक्टिंग द सेकंड सर्वे विल बी ऑन माइग्रेंट वर्कर.
The third survey they'll be conducting is the employment generated by professionals. कि professionals इसके majorly दो objectives हैं कि सबसे पहले they'll be estimating कि कितने active professionals हैं country में, in our country, in India. And second, कि वो जो professionals हैं, how like the employment they are generating. ठीक है, so these two things they'll be estimating through this survey. So far we have read about 3 surveys कि domestic worker पे they'll be the first survey, second survey migrant worker पे होगा, उनकी conditions पे, उनकी working condition, उनकी socio economic conditions पे, और third एक जो employment generate कर रहे हैं professional, third survey will be on that. The fourth survey it is going to conduct using the various technologies. And the fourth survey will be All India Quarterly Establishment Based Employment Survey. इसका मेजर एम क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास जो डेटा होता है, तो जितने भी अगर कोई डेटा में गैप्स आ रखे हैं रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट नंबर्स कि कितने लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है एंड ऑल ऑफ दैट, सो इट विल बी it will be reducing that data gap and it will be providing the correct numbers कि employment numbers कितने exactly हैं. The last survey it is going to conduct is on transport sector कि transport sector कितना employment generate कर रहा है. So I'll just repeat all the sectors. The first one will be on domestic worker, second will be on migrant worker, third will be on employment which is generated by the professionals, fourth one will be the quarterly establishments based on the employment survey, and the last one will be how much employment is being generated by the transport sector. Significance we've already discussed, that we'll be using various technologies, we'll be using artificial intelligence, so it will be reducing the time we generally take during the manual survey. So this will be reducing the time to compile these survey by 30 to 40%. It claims that it is going to reduce the time by 30 to 40% than the usual time which we used to take during the manual surveys. ठीक है. Beside this, they can also ask you this in your exam कि लेबर ब्यूरो और कौन से सर्वेज या कौन से कंपाइलेशंस रिलीज करता है या कौन से सर्वेज कंडक्ट करता है. सो देर आर 2 really important compilations or statistics they release, the surveys. The first one is consumer price index for industrial worker के लिए and for agriculture and rural laborers. Okay, to summarize this topic, we have read कि कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन्होंने लॉन्च करे हैं और जिससे 5 ये सर्वेज कंडक्ट करने वाले हैं. I've already told you the names of these 5 surveys twice, right? And significance we know कि time reduce होगा इसीलिए, and the labor bureau और क्या क्या survey या फिर compilations release करता है, we've also talked about that. Alright, next up we have Tree City of the World. Okay, so as the name indicates कि ये कुछ तो environment से related या फिर planting of trees से related है. तो recently अभी Arbor Day Foundation पे UN Food and Agriculture Organization FAO ने हैदराबाद को 2020 का Tree City of the World recognition दिया है. ठीक है, which city? This is important for us कि which state has got this recognition? Hyderabad has got this recognition in our country. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है. ओके, टू नो मोर अबाउट दिस प्रोग्राम, तो ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है एंड एज द नेम इंडिकेट्स दिस रिकग्नाइजेज वो वाले टाउन्स या वो वाले सिटीज़ या वो वाले स्टेट्स जो कि सस्टेनेबल तरीके से, जो कि प्रॉपरली अपने अर्बन फॉरेस्ट को या फिर अपने ट्री कवर को मेंटेन करते हैं, राइट? सो इट रिकग्नाइजेज दोज एरियाज. ओके, दिस इज अब यहाँ पर a probable question could be there in our mind कि ऐसा हैदराबाद में क्या किया कि उसको ये recognition मिला. So we'll just read that क्योंकि वही ज़्यादा important है हमारे लिए. तो हैदराबाद में actually बहुत सारे ना programs चले थे regarding to increase their green cover in the state. So the first one was हरिता हरम प्रोग्राम और अर्बन फॉरेस्ट पार्क प्लान. हरिता हरम प्रोग्राम में बेसिकली ये एक लार्ज स्केल प्लांटेशन प्रोग्राम था अपना ग्रीन कवर इंक्रीज करने के लिए इन द स्टेट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक अर्बन फॉरेस्ट पार्क प्लान भी इनके पास था. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द प्लान्स एंड दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव व्हिच वर टेकन बाय हैदराबाद ड्यू टू व्हिच दे गॉट दिस रिकग्निशन. ठीक है, and Hyderabad is the only city from India to get this recognition. ठीक है, as a tree city ये हैदराबाद को ही ये recognition मिला है. And with this recognition Hyderabad joins 120 other cities
from 23 countries, and those 23 countries are located in the country, and those 23 countries are located in US, UK, Canada and Australia. Alright, so ये दो चीज़ें you must remember कि Hyderabad got this, actually this one thing only, that Hyderabad got this recognition, and also you can quote these kind of programs, हाँ, these kind of programs in your mains examination, कि ऐसे कुछ programs जैसे Hyderabad example में you can quote कि ये वाले exam, for example this program was initiated by Hyderabad to increase its green cover, तो ऐसे वाले examples आप quote कर सकते हो in the mains, right? So that was all about that topic. Up next we have nurturing neighborhood challenge. Acha. So first thing first, two things which are important here for our exam perspective. First, that it comes under the smart cities mission. ये smart city mission के अंदर आता है, which further comes under Ministry of Housing and Urban Affairs. ठीक है. अब लेट अस अंडरस्टैंड नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज है क्या. सो ये एक 3 साल का ये एक इनिशिएटिव है जो कि इंडियन सिटीज़ के साथ मिलके ये होगा, विच इज़ अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन एज वी डिस्कस्ड, एंड इट्स बेसिक एम इज़ टू इम्प्रूव द पब्लिक स्पेस. नेबरहुड प्लानिंग बेटर हो उसके लिए ये काम करेंगे. ठीक है. एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड सर्विसेज हो, तो चाइल्डहुड सर्विसेज बेटर हो, एक्सेस हो हर जगह उन सर्विसेज का, राइट. डेटा मैनेजमेंट हो across the cities, across the country rather, right. And also the major objective, the major aim is to propagate an early childhood centric approach among the Indian cities. That's the major objective it has, right. So yeah, just nothing major you need to remember about this topic. सिर्फ आप ये एक दो चीज़ें याद रखिए. सबसे पहले this nurturing neighborhood challenge comes under this very evergreen topic smart cities mission के अंदर ये आता है, which further comes under Ministry of Housing and Urban Affairs, and its major कुछ objectives आप देख लेना कि अच्छा this nurturing neighborhood challenge is related to this. ठीक है. Nothing deep you need to read about this topic, right. So that was all about this topic. Next up we have a really beautiful topic, like this beautiful duck, मैंडरिन डक. तो ये डक को अभी रिसेंटली स्पॉट किया गया है असम में. अगर कोई भी नई स्पीशीज़ स्पॉट की जाती हैं तो मेक श्योर दैट यू एटलीस्ट प्रिपेयर दीज टू थिंग्स अबाउट दोज न्यू स्पीशीज़. फर्स्ट कि वो कहाँ मिली हैं, देर लोकेशन जहाँ पर भी वो मिली हैं, जहाँ पर भी वो स्पॉट की गई है. एंड सेकेंड, सर्टेन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़ विच हैज़ बिन फाउंड, राइट. ये दो चीज़ें तो मेक श्योर दैट यू राइट देम इन योर नोट समवेयर, यू राइट देम. ठीक है. तो यहाँ पर मैंडरिन डक इज स्पॉटेड इन असम की मागोरी बील में ये मिली है, राइट. If you talk about its habitation, अच्छा ये it is not one of the, it is the most beautiful duck in the world. इसको ये tag provide किया गया है. As you can see also this is really beautiful duck. Okay. तो टेम्परेट, इसके हम हैबिटेशन की बात करें तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलती है, ये वेटलैंड्स में भी मिलती है. एज यू कैन सी ऑल्सो रिवर, स्टीम, बॉग्स, और यहाँ पर फ्रेश वाटर लेक्स में भी ये मिलती है, स्वॉर्म्स में भी ये मिलती है, राइट. इट इज़ नेटिव टू ईस्ट एशिया. ठीक है. बट वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका में भी मिलती है, लाइक रशिया, कोरिया, जापान एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में भी इट इज़ ऑल्सो सीन, राइट. द डक डज नॉट visit India regularly, and that is why it is in the news, क्योंकि ये regularly नहीं आती है. It is because India is not on its usual migratory route. ठीक है. बट ये अभी यहाँ पर दिखी है, तो that is why it is in the news, right. More recently it was sighted in Manipur's Loktak Lake, which is a Ramsar site, in 2013. ठीक है. और 2014 में भी इट वाज सीन. तो बहुत ही रेयर हमें ये देखने को मिलती है, एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम ऑल्सो. IUCN स्टेटस है इसका लीस्ट कंसर्न. ठीक है. और ये जहाँ पर मिली है उस जगह की, इफ़ वी टॉक अबाउट मागुरी मोतापुंग बील के ये पास में ये मिली है, विच इज़ लोकेटेड नियर दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, असम. नेशनल पार्क्स आर ऑलवेज important for our exam, and these kind of locations, these kind of names are also important. ठीक है. They might ask you, so just try to remember these names also. इनको कहीं लिख लो and just revise them before you exam. That'll be easy for us. So दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के पास ये लोकेटेड है, right. And yeah. So just as I've told you earlier as well, just remember two, three things about this, कि मैंडरिन डक ये मिली कहाँ पर है, and certain characteristics, like for example IUCN status आपने याद कर लिया. ठीक है. इसका जो
हैबिटेशन है वो याद कर लिया. 2-3 things about this, the major characteristics of any of the species which is in the news, right? Okay, so that was all about it. Next topic. Next up, we have United Nations Capital Development Fund, UNCDF. Okay. What is more important for our exam is to read about this fund itself. वैसे the news was that recently Priti Sinha is appointed as the executive secretary of this fund, UN Capital Development Fund. But what's more important for our exam is to know about this fund itself, right? So it was established by UNGA 1966 में. ये UNGA के अंडर था. इसका मेजर फंक्शन है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फिनेंस करना, राइट? So that's the major aim of this organization, and this organization is also affiliated with UNDP. और इसके जो फंडिंग जो आती है इस ऑर्गेनाइजेशन की, दैट कम्स फ्रॉम द यूएन के कुछ मेंबर्स और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी इसको फंड करते हैं. सो दैट्स वेयर इट्स फंडिंग कम्स फ्रॉम, एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन यूएसए, न्यूयॉर्क. ऑलराइट, सो that is about it. बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अगर इफ़ दे आर इन न्यूज़ यू डेफिनेटली हैव टू प्रिपेयर देम, बट कुछ एवरग्रीन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो न्यूज़ में तो खैर रहती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है. WHO was in news so much कोविड की वजह से. सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दोज बॉडीज फॉर योर एग्जाम, राइट? यू प्रिपेयर देम रादर. Okay, so that was all about that topic. Up next we have, okay, so next we have a really interesting report called Greenpeace Southeast Asia report. I found it really interesting. So it is released by Greenpeace, जो कि एक NGO है, right? And the name of the report was Greenpeace Southeast Asia Analysis of Cost to Economy Due to Air Pollution. Read out the name properly. It says cost to economy, कि हमारी हेल्थ और हमारी इकोनॉमी पे जो कॉस्ट पड़ी है ड्यू टू एयर पोल्यूशन. इट एनालाइजेस दैट, right? So I found it really unique. Okay, so as the name clearly tells everything about the report, there's no need to go into the details. इसका नाम ही सब कुछ define कर देता है. तो जो भी air pollution की वजह से we're bearing the cost on the economy as well as on our health, it analyzes and identifies that loss or that cost. अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो findings हैं of this report, so 6 Indian cities, as always, Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad and Lucknow featured in this report. ये काफ़ी polluted cities में से आई हैं. And globally if we talk about, so Delhi, Mexico City, Sao Paulo, Shanghai and Tokyo, जिसमें PM 2.5 pollution caused approximately 160,000 deaths. So these are the most populous cities और जहाँ पर pollution भी काफ़ी ज़्यादा है. So these were the findings. Make sure कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसकी एटलीस्ट इंडियन फाइंडिंग्स यू make sure that you remember the Indian findings at least, right? So that was all about this topic. Up next we have a really, an historic agreement, Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement, CECPA, between India and Mauritius, which is just held. We'll read about it comprehensively. Okay, all right. So what this agreement is all about, if we talk about in short and brief, though, it is basically a kind of free trade pact or a free trade agreement, which is going to provide an institutional mechanism to encourage and improve the trade between the two countries. So definitely it is basically aims to increase the trade only between the two countries. All right. If we talk about Mauritius, so Mauritius is a part of African Union, आपको पता ही होगा इसके लोकेशन भी, and our major goal is to to basically to invest in the Mauritius is to get access to the Eastern African countries in future, क्योंकि Mauritius से Eastern African countries बहुत पास पड़ती हैं. तो अगर कल को हमें वहाँ भी इन्वेस्ट करना हुआ तो Mauritius will be a safer point कि वहाँ पर हम जाके we can get access to the Eastern African countries as well, right, in the future. और presently if we talk about Mauritius, तो Mauritius की ना फिशिंग इंडस्ट्री इज़ रियली गुड. तो अंडर दिस FTA अब ये ना एक्सपोर्ट कर पाएंगे फ्रोजन फिश टू इंडिया, जिससे हम लोग को भी वैरायटी मिलेगी रिगार्डिंग फ्रोजन फिशेस. ठीक है, अलॉन्ग विद इट Mauritius will be able to export biscuits,
फ्रूट्स, शुगर, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. बट ये तो होगी मॉरिशस की बात कि दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट इट. हमें क्या मिलने वाला है इस FTA से विल बी कि ऑफ कोर्स वी ऑल्सो विल बी गोइंग टू एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मॉरिशस एट अ बेटर प्राइस. बट वहाँ पे ना द मेजर थिंग वी आर गोइंग टू अचीव विद दिस इज कि वहाँ पर हमारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं, जो एंटरप्राइजेज हैं, उनको एक्सेस मिल पाएगा इन द मॉरिशस. सो दैट्स अ रियली बिग पॉइंट वी हैव हियर, राइट? So that was about this agreement, okay, this comprehensive economic cooperation, this partnership, and this agreement. Now there's this new term which I'd like to introduce you here, कि ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म के लिए भी दोनों कंट्रीज ने बेसिकली साइन कर लिया है, नेगोशिएट कर लिया है कि ओके विल बी अग्रीइंग टू दिस. बट व्हाट इज दिस ATSM? व्हाट इज दिस ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म? तो ये एक स्पेशल सेफगार्ड होता है. इसमें बेसिकली ये है, इन सिंपल वर्ड्स इफ आई टेल यू, कि अगर किसी भी कंट्रीज को, इधर इंडिया और मॉरिशस को, अगर ये लग रहा होगा कि दी अनदर कंट्री इज इम्पोर्टिंग टू मच, तो वो उसी पॉइंट पे दूसरी कंट्री को स्टॉप कर सकते हैं, दैट यू cannot import more than this in our country, right? So this is the brief of this. Let me just read this out for you. So this will protect the country from any sudden or dramatic increase of input. Like I said कि अगर ज़्यादा import हो रहा है तो हम रोक सकते हैं किसी भी country को, and this will be applicable to both the countries, all right? Under this mechanism, if the import of a product are rising alarmingly, then after reaching a certain threshold, कि जब हमें लगेगा कि नहीं अब ज़्यादा हो रहा है, India can impose safeguard duties on import from Mauritius automatically, and the same provision applies to Mauritius as well against Indian import. So this is applicable to both the countries. जहाँ पर भी import का हमें ज़्यादा लगेगा, we can stop it. All right. So this is automatic trigger safeguard mechanism. To summarize this topic, CECPA के हम बारे में पढ़ा. ये this agreement is signed between India and Mauritius. Try to remember the name of the countries कि किन दो countries के बीच में हुआ है. Try to remember the location. Please open your map and see the location of Mauritius. Along with it, see the location of Africa also. ये अफ्रीका के बहुत African Union का ही एक part है, तो ये वहाँ पड़ता है. Also see the location of Maldives और Mauritius का लोकेशन भी देखने की कोशिश करना, because people usually gets confused between Mauritius, Maldives. तो इनकी लोकेशन एक बारी देखना. इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी इन दोनों की लोकेशन एक बारी try to see, ठीक है? So yeah, that was all about this topic. Up next we have हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. तो हमारे बजट में अभी जो फरवरी में रिलीज हो 2021 का 2022 का जो बजट रिलीज हुआ है, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है? तो विल बी रीडिंग अबाउट दैट ओनली, दैट हाउ it is going to be advantageous for us using hydrogen as a fuel. So hydrogen, if we talk about the chemically if we talk about, so it's a symbol, as we all know, it's H, okay? It is the lightest element in the periodic table, okay? It is, though it is not freely available, ये नहीं होता, it exists only in the combination with other elements, right? Also apart from this, इसकी blue hydrogen हो गया, grey hydrogen हो गया. There are we can divide the hydrogen into these categories. So grey hydrogen we get from fossil fuels, blue hydrogen which are produced from fossil fuels with carbon capture and storage. Green hydrogen, as the name indicates, is produced from renewable electricity. All right, hydrogen as a fuel, why are we doing this? Of course, to decrease our dependency on the other countries for the fuel, and also it is considered as an alternative to the fossils and other types of fuel. What are the major question here? The major question here, that how are we going to generate the energy from this? So this, here fuel cells will be required to transform the hydrogen into the electricity, and the fuel cells basically they combine the hydrogen and the oxygen to generate the electricity here. So they'll be combining these two and they'll be generating the electricity. The major question, the much bigger question arises here, कि what are the advantages of hydrogen fuel? कि advantages क्या होंगे? Of course, if we have launched such a big mission, तो advantages तो हैं ही. So the major advantage is it is readily available.
तो ये अबेंडेंस में है हमारे यहाँ पर, ज़्यादा हार्मफुल एमिशंस भी नहीं ये प्रोड्यूस करता है. सिंस हार्मफुल एमिशंस नहीं प्रेजेंट करता तो डेफिनेटली इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली. इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट मतलब जितना पेट्रोल और गैस के कंपैरिजन में इट इज़ मच मोर फ्यूल एफिशिएंट एज इट कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी पर पाउंड ऑफ फ्यूल. तो ये ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल एज वेल. दैट इज़ ये बहुत एक्सपेंसिव है. ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर. इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है. हेंस इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर, राइट. At present we do not have a proper infrastructure to store it, right, and it is highly flammable because hydrogen gas burns in air at a very wide concentration, 75% tak, right. Hence it is very inflammable. So these are some of the advantages it has, and these are some of the these are some of the disadvantages it contains, and the advantages are these one. All right, so I hope it is clear to you. That was all about this topic. Up next we have Mahatma Gandhi National Fellowship, that is MGNF. See, if you're looking for an opportunity to combine in one of the best management institutions with making a contribution to national development, then MGNF may be just what you have been looking for. MGNF है क्या? MGNF is a 2-year program, right, which is managed by the Ministry of, it's a 2-year program, okay, which is managed by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, each of the state skill development missions and their academic partner IIM. Okay, what IIM Bangalore will be implementing it, by the way. ठीक है, recently what has happened that this Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, इन्होंने ये MGNF को roll out किया है. Under which scheme? Under the scheme Sankalp. We'll also be reading about Sankalp, but before that मैंने सोचा MGNF के बारे में I'll tell you, right. So yeah, it's a skill development program basically. So its major aim would be to address the challenges of known availability of the personnel for the implementation. जो भी बहुत सारे skill development programs होते हैं उनके लिए, उनको implement करने के लिए personnel की availability को complete कराना will be its major aim. ठीक है, at the national, state and the district level. ठीक है, and I've told you IIM Bangalore will be the implementing body for this, right. Next, let's now talk about Sankalp, जिसके अंडर ये फॉल करता है MGNF. Sankalp is Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Scheme. So this scheme was introduced in 2018 और 2013 में इसका tenure खत्म होने वाला है, and the same ministry it falls under MSDE, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. One really important point here is to be noted, that is the World Bank will be providing loan assistance to this program. जहाँ पर भी ये international organization associate हो जाती है किसी भी scheme से, make sure that you remember them. It becomes important कि World Bank या कोई भी, if any other organization is providing a loan for that matter, you must remember it, right. And as the name indicate, it is basically to acquire the skills, acquire the knowledge, right. So it will be providing the skill training qualitatively and quantitatively through strengthening the institutions. Okay, I'll just read कि क्या इसके major focus हैं, क्या focus areas हैं. So they'll be focusing on institutional strengthening, national, district और state level पे. They'll be providing quality assurance of skill development programs, and they'll be making sure कि marginalized population जो है उनका भी inclusion, उनका भी involvement हो in the skill development programs out there at the national, state and district level. Apart from this, they'll also be focusing upon expanding the skills through public-private partnerships. So that was about the Sankalp scheme. To summarize this topic, we've read about Sankalp, we've read about MGNF, the new thing which has just been introduced, right. So yeah, that was all about this topic. Next up we have Indigenous mapping portal. There's nothing much to remember about this topic. ये basically इसरो ने अभी एक map, इसरो ने और Map My India ने एक collaboration में ये पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है. गूगल मैप्स का ये ऑल्टरनेटिव होगा. ये बेसिकली ये है so that we can introduce the indigenously developed products or the portals.
राइट. एंड इससे पहले भी there were many portals जो कि या फिर या there were portals जो पहले आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भुवन आया है, वेदास आया है, मॉस्टैक आया है. ठीक है. सो या just make sure you remember this thing कि इसरो और मैप माई इंडिया ने ये कोलैबोरेशन में अनाउंस किया है. एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू गूगल मैप्स. गूगल मैप्स का नाम लेते ही यू कैन रियली कनेक्ट वेल कि वो किस चीज़ में यूज़ होने वाला है. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सर्टेन लाइक आई जस्ट मैंशन कि भुवन, वेदास और मॉस्टैक करके पहले भी जियो स्पेशल हमारे कुछ पोर्टल्स थे. लेट जस्ट रीड देम आउट फॉर यू. वैसे तो यू डोंट need to go into so much of detailings of this, but yes, definitely know certain points. Bhuvan portal, again, it is developed by ISRO only. Again, it is a portal which will be providing us geospatial data, right? तो कुछ geographical informations ये हमें provide कराने वाला है. All right. Next, we have Vedas, that is visualization of Earth observation data and archival system. तो ये भी इसरो का ही है. एंड इट विल बी यूजिंग ऑप्टिकल एंड माइक्रोवेव एंड थर्मल एंड हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशंस. और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ये बेसिकली ना एकेडमिक और रिसर्च फील्ड में ज़्यादा यूज़ होने वाला है. सो दैट इज़ द मेजर एडवांटेज इट होल्ड. नेक्स्ट वी हैव मोसडैक, दैट इज़ मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल center, again by ISRO only, and it will be dealing with the जितने भी ओशन से रिलेटेड या फिर वेदर इंफॉर्मेशन से या फिर साइक्लोन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, इट विल बी प्रोवाइडिंग दोज इंफॉर्मेशंस. ऑलराइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट सम ऑफ द पोर्टल्स एंड द न्यू वन which has just been announced. ठीक है. Indigenous mapping portal, right? Okay. So next up and the last topic of the week is Sandesh app. तो रिसेंटली नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, संदेश ऐप. इसका मेजर ऑब्जेक्टिव वही है सो दैट वी यूज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर जितना से ज़्यादा हो सके. राइट. ये एक व्हाट्सएप की तरह ही एक मैसेजिंग ऐप है. जस्ट मेक श्योर यू रिमेंबर कि वो कभी भी ना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछेंगे, बट मेक श्योर कि आपको यू मस्ट हैव एन आइडिया कि व्हाट दिस ऐप इज़ रिलेटेड टू. ओके. इनिशियली ये सोचा गया था कि दिस ऐप will only be available for the government officers, but अभी ये public common people के लिए भी available है. Right. Okay, and this is indigenously developed, so that's a plus point we have here. Certain features, अगर कुछ features हैं तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों से ही हम ऑपरेट कर सकते हैं. Right. It also allows the user to mark a message as confidential, so that is again an advantage it holds. There are certain limitations, और limitation ये है कि the app does not allow कि user change कर सके अपनी email ID या फिर register जो phone number है उसको change नहीं कर सकते. If you have to use the another number तो आपको re-register करना पड़ेगा. Like for example telegram if you talk about telegram में होता है कि from the same app there only we can change our number, वो हम कर सकते हैं, but that's the limitation this app holds, this Sandesh app holds. But again there are certain advantages as well. Right. So with this we come to an end of our discussion. I hope it was informative. Thank you so much. So the grand success of crash course given by IQRA in 2020 is destined to be repeated in 2021. Biggest gift of this program, biggest. In case you decide to join for the GS program next year, you will get this 5,000 relaxation. This course is also very good for new aspirants who are planning to give in 2022 and 23. For them it will be a boon. In this course they will know what exactly to do in prelims. It's not only for those who are appearing in 2021. It's for all the future aspirants. This 5,000 will help you to save at least your 50,000 and many of your mental hassle. As you took it happily last year, you will again come to us for the revision, for the preparation of this examination, and hope to see you soon in IQRA. Thank you.